पृथ्वीराज सुकुमारन की आने वाली फिल्म द गोट लाइफ इन दिनों चर्चा में है। यह फिल्म लोकप्रिय उपन्यास आदु जीविथम पर आधारित है, जिसमें एक सच्ची घटना बताई गई है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए कष्टों से जूझता है। हाल ही में इस फिल्म के गाने का लॉन्च हुआ, जिसका नाम है होप, और इस गाने का लॉन्च हुआ है कोचीन में, जहां पर इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकार मौजूद रहे। साथ ही इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्ट करने वाले AR रहमान भी रहे, जिन्होंने लॉन्च के मौके पर सुरों की महफिल जमा दी। तो आइए बात करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर AR रहमान से और जानते हैं इस फिल्म से जुड़ा इनका सफर। हम हैं कोची में और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनको किसी इंट्रो की मतलब वो किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है। उनका अलग म्यूज़िक ही उनकी एक अलग पहचान बनाता है और वो है सर AR रहमान। वेलकम सर। थैंक यू। द गोट लाइफ, तो इस बार इस मूवी की आपकी जो म्यूज़िक मेकिंग जर्नी है कैसी रही? It's a book which is iconic now. It's become like one with the whole state, Kerala. And so when I met Blessy, I understood that this is trying to make a timeless classic. And so the score had to reflect what he's making. So that's the kind of thing approach we've taken. Make it very timeless with the instrumentation, everything, so that it doesn't become old. It has a... मूवी की बात करें तो किन किन चीज़ों पर आपने खास मतलब इस म्यूज़िक के लिए और अलग एक्सपीरियंस था ये वाला? So this starts in Kerala. It's very green and beautiful and there's water, and then it goes exactly opposite, desert. And the desert music actually, because I'd done The Messenger of God with Majidi, I'd done some research, and so that helped in scoring for this kind of thing. The beginning is very, very traditional, what the melodies of Kerala would be. म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हर बैरियर को तोड़ के एक सबको एक करता है। वही चीज़ आपका जो सॉन्ग आया है होप सॉन्ग, उसमें दिखाई दी है। It has multiple languages. It has Hindi and Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam, of course, and English. I didn't know how it's going to come out, so I just followed how the director wanted me to do that. But then he had a beautiful visual. He shot the video so beautifully that it's very emotional to see that. पृथ्वीराज के साथ काम करना, एक बार आपकी फिर जोड़ी है रसूल के साथ में, तो इस बार ये जोड़ी क्या कमाल करने वाली है? It's the movie sound plays almost 50% of the movie, because the sound design and the music has to make people sit and watch the movie. Rasul's done as usual great job. And for me, after scoring, I said, if you want to remove the music in certain places, please go ahead. Because sometimes not having music and effects is also a very good thing. We did remove music, one of the pieces, but on the whole, it's an experience, a cinematic experience, where you can only enjoy it in the theater. इंस्पिरेशन है काफ़ी लोगों के लिए, सभी लोग आपको फॉलो करते हैं। आपकी कौन इंस्पिरेशन है और आप किसे फॉलो करते हैं? I'm following a lot of people on Instagram, around 500 people. There's so many new generation is coming up, and so I get inspired by younger talent now. Not only in India, I think they're from Europe and sometimes in Azerbaijan or in the US or Africa. And so it's beautiful to see young talent coming in, and the way they interpret with the present kind of टिप्स या कुछ एडवाइस अभी की जनरेशन के लोगों के लिए आपकी तरफ से कुछ होंगे? This generation, they have to give advice to us, because they know better things than us. They know about how the computer's thinking,
how AI is going to think, and they're all switched on. And it's nice to see how these challenges are handled by that generation. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके बाद के लिए और क्या प्रिपरेशन अभी से शुरू है? This movie is coming out. It's coming out in 5 languages, and I've done Chamki Love, which is coming on Netflix. Then Maidan is coming. So a lot of exciting projects. Yeah. नमस्कार, मैं रोशन मैथ्यू एक्टर हूँ, फिल्मों और थिएटर में काम करता हूँ और भी एक आड़ जीवितम का ऑडियो लॉन्च चल रहा है इधर. AR रहमान सर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वेरी एक्साइटेड. आई वाज ब्लोन अवे. आई मीन लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्पेक्टिकल एंड टू डिलीवर ऑन एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर ऑलरेडी हाई इज वेरी डिफिकल्ट, and I think this trailer does that. And you know, even without anything, the story is like a modern classic. Not like it's definitely a modern classic in Malayalam. And yeah, it was exciting even as just material, and now with all these great minds working on it, I'm very very excited, very very curious to see what they've made out of it. I was just listening to Ennavale on the way here, so that's been looping in my head for a while. Oh, there's a film. I'm being very selfish, but there's a film we did called Kude, in which I loved his performance. So there's that, and yeah, no, I'll just stick with Kude for now. Feeling very very good about it. I like, it's a project that was very special to me. It's an important story, and it's also interesting in terms of a project that opens up like a multilingual space. I think there's a lot of work that can be done in that space. So for all of these reasons, I'm very very happy with the response that Poach has been getting. I've always considered myself an actor. नमस्कार, मैं रोशन मैथ्यू एक्टर हूँ, फिल्मों और थिएटर में काम करता हूँ. आड़ जीवितम का ऑडियो लॉन्च हो रहा है इधर और AR रहमान सर परफॉर्म कर रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. I know I have been part of the discussions. Like the makeup man of this movie was Ranjit Ambadi. We have worked together in many movies. So from the beginning of this movie's production, I've been part of that discussion with Ranjit Eda. And Mr. Prithviraj, he's an elder brother to me. He has been very important in my career also. So someone spending so much time, so much health for one movie, it's not a good practice to lose this much fat and continue that particular stage for a while. And because of Corona lockdown and all, he was stuck in Jordan for a while, and he had to maintain that weight for many more months after the lockdown also. So, and he consistently kept on maintaining that particular physique for the perfection of this movie. That is definitely admirable, and I'm very happy that I got an invite for this function. I believe Malayalam cinema is going global, and as a part of a Malayalam cinema fraternity, I'm definitely excited about it. वैसे इस फिल्म को लेकर सभी कलाकारों के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखने लायक है. बता दें कि ये फिल्म 28 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. बिल्कुल इन नेल पेंट्स के रंगों की तरह हम भी बिखेरते हैं ना आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां.